गाइस आज मैं आपको बताने वाला हूँ आप कैसे अपनी मोबाइल स्क्रीन को इसमें एंड्रॉइड फ़ोन की मिरर कर सकते हैं, विंडोज़ 11 में कनेक्ट कर सकते हैं। तो सिंपली आपको करना क्या है, सर्च में जाना है और आपको टाइप करना है सेटिंग्स प्रोजेक्शन सेटिंग्स एंड क्लिक ऑन, इस पर क्लिक करना है आपको। इसके बाद यहाँ आपको क्लिक करना है ऑप्शनल फीचर्स। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ जो फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा है एड एन ऑप्शनल फीचर्स, इसके नेक्स्ट में आपको दिखेगा ऑप्शन व्यू फीचर्स, इस पर क्लिक करना है और यहाँ आपको सर्च करना है वायरलेस डिस्प्ले। वायरलेस डिस्प्ले, और इसको आपको सिलेक्ट करके इसे नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है और इसे फिर इंस्टॉल कर लेना है। Once it is installed, you just need to go back to projection settings, and just click on this launch the wireless audio display to project to this. And now you just need to open your phone and just open your phone and just find the cast option in the setting and just choose your device from your mobile. And guys, boom, your mobile will be on your PC. Fine. So if you want without lag mirror, you have to make sure that you are close to your router, or you can connect your PC with your USB as well. And you can see that I've connected to my PC using my mobile. Hope you like it. You just need to find the cast app, or you can find the setting. You just need to go to setting, and you just need to, or you can find the cast option from here. You can see this cast option. Let me scroll down, or you can search here for the cast option, CAST cast, and you will find this option. Click on it, and you just need to click once you enable, guys, just once you enable this option, your PC will be listed here. You just need to select your PC and you will be connected to your PC. So that's how you can do it. Hope you like it. Thanks for watching. Bye bye. I just need to, yeah. So hope you like it. Thanks for watching. Bye bye.